हेलो एंड हाय एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत बंसोड़े और मैं हूँ आपका अपना स्पीच थेरेपिस्ट। लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नया और अनोखा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है एक रेसिपी। जी हाँ, एक रेसिपी। और इस रेसिपी को मैं दो पार्ट्स में, दो वीडियोस में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट आपको क्या चीज की रेसिपी दे सकता है? रेसिपी बोले तो कोई चीज बनानी पड़ती है, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनेगी अपनी बात। हाउ डू वी टॉक आज का टॉपिक है, हम बात कैसे करते हैं। और इस टॉपिक को मैं डिवाइड करूंगा टू वीडियोस में। फर्स्ट वुड बी हाउ डू वी टॉक, हम बात कैसे करते हैं। सेकेंड, ऐसा क्या होता है जिसके वजह से बात करना मुश्किल हो जाता है। तो वी गेट फ्यू किड्स जो हमें पता है हैव डिफिकल्टी इन स्पीच। तो वो क्या डिफिकल्टी होती रहेगी, उस रेसिपी में क्या गड़बड़ होती रहेगी जिसके वजह से किड्स आर सफरिंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। सो नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट वन, हाउ डू वी टॉक। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सो बी रेडी विद द लिस्ट। फर्स्ट इज द लंग्स along with the trachea, and second is the voice box, is the larynx. Third would be vocal folds, which is situated inside the larynx. And the fourth would be oral cavity, and along with the oral cavity, articulatory muscles. And last but not the least, but very important, और जिसको मैं कहता हूँ कमांडर इन चीफ, इज ब्रेन। सो आगे बढ़ते और देखते हैं इन सब इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम बात कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आएगा लंग्स। तो लंग्स क्या करता है? मेरे हिसाब से लंग्स को मैं कहता हूं ए पावर सप्लाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच। तो ये सप्लाई करता है पावर। व्हाट काइंड ऑफ अ पावर? द पावर विच इज जनरेटेड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ अ लंग्स। सो लंग्स हैज अ नेचुरल मूवमेंट, लंग्स हैज अ ability to make a movement where it do contraction and the relaxation, and because of this movement actually lung is able to pump up air upwards। और जब भी हमें बात करनी होती है तो वी नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर along with the force to come up from a trachea। तो लंग्स वही करता है, लंग्स करता है पंपिंग एक्शन एक्स्ट्रा with force, and because of that force the air travels from the trachea and it meets at the larynx, voice box। so वहां पे होता क्या है? when the air is traveling through larynx and when it passes to vocal folds, the vocal fold has an immense and a beautiful movement which is called as a vibratory movements. It does a vibrations, it comes together at a central line and then it goes apart, it comes together in a central line and goes apart, and they does it in a quick succession like a vibration this way. So what happens at the same time when the vocal folds are making a vibrations and the air is passing through them, it actually gives rise to something you and me are able to hear, and that is called voice। और वॉइस जनरेट करने तक a fair amount of intelligence is needed, and beyond that, to produce a speech fair amount of intelligence से काम नहीं चलता। Extra amount of intelligence is needed to produce sound beyond this level। so what happens beyond this level? larynx जब voice generate करता है, it pushes voice, it moves voice towards the oral cavity। this is the oral cavity, and what happens when it is moved towards the oral cavity? the voice gets into a quality of a sound which is called as a resonance। yes, resonance। and what happens over there? oral cavity is also bearing articulatory muscles. These articulatory muscles, when they comes together to make some sort of a contact, and at the same time they are making use of resonance created in the oral cavity, actually gives rise to some sort of a sound। for example, if tongue is able to make utilize the resonance very properly, then it might produce sounds like ta, da, na। if lips are able to make utilize this oral resonance quite nicely, then it might produce a sound like pa, ba, ma, pa, ba, ma। so these are the articulatory muscles like lips, the tongue, your jaw, cheek pockets। I'm not going to tell you the scientific names of all it because I want to spread awareness very nicely and want to reach to commonest of the people
when they have to understand how do we speak, right? So this is how we speak. But to make one single sound, our system has to go through all these complicated movements, and these complicated movements has to happen in a one go. That is, it has to happen in a synchronization. And who is responsible for the synchronization is brain. Fine. So to make one sound, these kind of complicated movement. But speech is not about the one sound, it is about the string of sound, it is about the string of lengthy utterances. So if this much complicated movements for a one sound, then you can imagine how it is difficult to make n number of sounds in a one go with the synchronization of all these organs by the commander-in-chief brain. One more thing, speaking is not enough. Whatever we speak has to have some meaning, it has to make some sense. So to make sense, to produce a meaningful utterances, brain actually has to utilize the language of rules when speech expression is taking place. And that's why it is far more intelligible act than we feel, and is more complicated act when it has to utilize the rules of a language for the expressive purpose. So up till here is how do we speak. इन सेकेंड पार्ट में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा बच्चे जब सफरिंग फ्रॉम अ डिफिकल्टी टू स्पीक तो उनमें एक्चुअली होता क्या रहेगा. सो आई एम गोना ट्राई इट ऑन माय पार्ट 2. स्टे ट्यून, wait for the part 2. I know you all are interested more in a part 2 than part 1, but part 1 is very important because awareness is my aim, and if you don't know what is part 1, explanation of part 2 will be difficult for me. So it is here how do we speak. This is my recipe जिसको मैंने कहा था बनेगी अपनी बात. So signing off from here, myself हेमंत बंसोड़े, आपका अपना स्पीच थेरेपिस्ट.